Well, a 5-judge constitution bench of the Supreme Court had cleared the government's stance on the Article 370's abrogation. Now, the BJP had faced a lot of flack from the opposition over the issue. Old political foes, the PDP and the NC joined hands and formed the Gupkar alliance. The government was taken to court over the issue with the top court's seal of approval. It is a win for the BJP's stance on the issue. It's a landmark Supreme Court verdict on abrogation of Article 370. Terming the article temporary, a 5-judge bench of the Supreme Court upheld the abrogation. The court said that Jammu and Kashmir did not retain sovereignty after it acceded to India. The top court has asked for restoration of statehood soon and directed the poll panel to hold elections in Jammu and Kashmir by 20th September next year. Big win for everyone, every Indian. This is big win for the people of Jammu and Kashmir, and this is a big win for Kashmiri Pandit also. The nation is supreme. The Article 370 was a law and article which created division between India and Kashmir. It made Kashmiris created a feeling, deliberate feeling was being created in Jammu and Kashmir that you are separate from rest of India. You are not part of India. Yeah, it's a very good decision. I mean, the country should be very happy at because the Supreme Court has given its imprimatur on the fact that the complete integration of Jammu and Kashmir has now taken place, and Article 370 doesn't exist anymore. का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है। PM Modi was quick to laud the Supreme Court verdict on Article 370, calling it a beacon of hope. In the words of Solicitor General Tushar Mehta, today's date will go down in the history of India. When a Himalayan constitutional blunder of the past with gigantic proportion is ultimately corrected by the government. The apex court has also validated the union territory status of Ladakh. Even as Supreme Court upheld the abrogation, the verdict has reignited the Kashmir debate. नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ अक्साई चीन को वापस लाएंगे, पीओके को वापस लाएंगे। और मैं पूछा भी अफगानिस्तान क्या होगा? खुद हम सीधा अफगानिस्तान तक पहुंच भी जाएंगे ना। जब पीओके हम वापस ले लेंगे तो अफगानिस्तान की रास्ता में हमारे लिए खुल जाएंगे, तो भारत की बॉर्डर बन जाएगी अफगानिस्तान। अदालत का फैसला सभी को स्वीकार होना चाहिए। ये सही है कि जम्मू कश्मीर वैली में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस फैसले से दुखी हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 30 दिसंबर 2024 तक राज्य का दर्जा पुनः प्राप्त दिया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर को। इनकार भी किया, कहा ये मामला सारा जो है संवैधानिक है, ये मामला सारा जो है ये आइन का है। तो क्या आइन के मुताबिक कदम उठाए गए? नहीं उठाए गए, तो उसी पर हमें फैसला करना है। तो जब जुडिशल स्क्रूटनी होगी, जब इस कसौटी पर, आइन की कसौटी पर इनको 5 अगस्त और 6 अगस्त के फैसलों को जब परखा जाएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। It all started with an impassioned Amit Shah arguing for the abrogation of Article 370. मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात
कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। The Modi government delivered on a promise that the BJP had been making in its election manifestos. From the very first day, political parties were against the abrogation, with valley-based parties being most vociferous. Valley-based political parties such as the Abdullah's National Conference and Mufti's People Democratic Party that don't see eye to eye joined hands against the article. The unanimous Supreme Court verdict in the case can be seen as a big moral victory for the Bharatiya Janata Party. A defining moment in India's history that puts all the cynicism to rest. Centre stands vindicated on Article 370 decision. Bureau Report, Republic TV.